कि देश की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही, सिर्फ वही देश को बचा रही है, तो बाकी के जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए। ये जो नैरेटिव है ये बड़ा खतरनाक नैरेटिव है। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा के लिए एक बहुत बेहतरीन जगह है, क्योंकि जिस 2011 में भारतीय जनता पार्टी को 4% वोट मिले, वहां पे आज वो लगभग 40% वोट पर बैठी हुई है। यानी वहां पर टीएमसी के लिए और बीजेपी के लिए लड़ाई, बहुत जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। आज की तारीख में जी, आज की तारीख में अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कम से कम 64% आबादी वो है जो बीजेपी को वोट नहीं करती है। 64% आबादी देशद्रोही है। Dangerous narrative. Pradeep Bhandari, respond to that, to pitch it some kind of like a civilizational battle. Well, definitely it's a civilizational battle, Padmaja. When you have Bobby Hakeem, who's the mayor of Bengal, mayor of Calcutta, and the right hand of Mamata Banerjee, who says openly that he dreams of a place when Calcutta will become Muslim majority. The soul of India continues to be a democracy when India is a Hindu majority country, and Bengali Hindus are the soul of Bengal. It is as simple as that. What you see in Bangladesh when the Hindus became minority, the Hindus today are being targeted by the radical Islamists. Today you see Mamata Banerjee openly backing illegal Bangladeshi infiltrators and has not given 600 kilometers of land. So what do we do when we have a political opponent which wants to change the demography of Bengal, the soul of which is Swami Vivekanand, Rajaram Mohan Roy, Rabindranath Thakur, and all of this soul is only protected when Bengal continues to be a Bengali Hindu majority place. When you have a situation when Jagoma, which is the Sanskriti of Bengal, when Shakti, which is the Bhumi of Bengal, and a Trinamool Congress leader comes up and stops and says that you cannot sing Jagoma or Joyma in the land of Shakti because it does not appeal to the appeasement of Trinamool Congress. So when you have this agenda of the Trinamool Congress where it wants to alter the demography and the soul of Bengal, definitely it's a civilization. The people of Bengal are fighting. What do we do when we have illegal Bangladeshi infiltrators देखिए पद्मजा, who are going ahead and raping? पद्मजा, ये मैंने कहा ना, ये नैरेटिव